focus. Ideate, innovate, enable. RR Kabel presents Short Circuit Se Suraksha, powered by News 18 Networks. Today, when we wake up in the morning, the first thing we hear is the noise of construction happening around us. In this world of construction, one element is often overlooked, yet undeniably crucial: the wiring that forms the lifeblood of our homes and public spaces. While electrical safety is non-negotiable, data on fatal short circuit incidents and deaths caused by it are increasing. Today, we embark on an illuminating journey, shedding light on the paramount importance of wires, the precise selection, and the basis behind often occurring electrical fire accidents. With Mumbai and Delhi being at the top of the list, the data points out that most electrical fire accidents are led due to poor maintenance of fittings, ignoring fundamental aspects during selection, and most importantly, not having sound knowledge of the potential risks and new age technology embedded in products. As the wire guru and pioneer of engineering excellence in the electrical world, Mr. Kabra, owner of the 30-year-old venture RR Kabel, is resolving the queries of our homeowners and sharing a glimpse of his futuristic and advanced vision for fire safety and beyond. गुड मॉर्निंग वायर गुरु। तो आप हमें ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपको क्या मोटिवेट किया टू एम्फेसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ वायर इन अ कंस्ट्रक्शन साइट। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत देखा, और जब भी हम देखता हूँ कि किसी भी चीज़ में, चाहे हमारे शरीर के बारे में देखते हैं तो हमारा पूरा फोकस जो बाहर क्या है, चेहरा कैसा दिखना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, चश्मा कैसा पहनना चाहिए, उसमें बहुत फोकस होता है। लेकिन शरीर के अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं रहता है। उसी तरह चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे आपकी झोपड़ी भी क्यों ना हो, चाहे छोटी पान की दुकान भी क्यों ना हो, लेकिन जिस चीज़ से आपको जो बिजली आ रही है वायर, उस पर तो पूरा ध्यान देना चाहिए, और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इससे ऐसा लगा कि इस पर अगर फोकस करेंगे, और जिस प्रकार की हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि लोग आग से इतने मरे, तो रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा जो मौत होती है वो फायर से होती है। तो एक मोटिवेट हुआ कि इसको कुछ अच्छा किया जाए। Not just the end consumer, but also the manufacturing units need to keep in check the quality and material they are using while processing the components together. It becomes their duty to produce hazard-safe material in compliance with industry regulations, thus providing the utmost protection. बहुत ही बज़ है ROSH और रीच को लेकर, तो आपका मानना क्या है, ये क्यों ज़रूरी है? एज अ कॉम्प्लायंस रीच और ROSH क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? पूरी दुनिया में तो मैंडेटरी है, भारत में नहीं है। ROSH रीच जो कंप्लायंस है, उसमें जो हजार्डस प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आपको हर 6 महीने में या साल भर में यूरोप में एक नया कानून आता है, वो हट जाता है। तो उसमें हजार्डस उसको बनाने में और उसको यूज़ करने में इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाता है। मेन तो बात एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, और इसमें जो हजार्डस प्रोडक्ट्स है वो कम हो जाते हैं। तो एक इसका एडवांटेज है। लेकिन जब आगे हम बात करेंगे तो और भी अच्छे से प्रोडक्ट उसकी बात करेंगे आगे। तो मेरे हिसाब से ये भी यहाँ पर भी मैंडेटरी होना अच्छा है। हम ज़्यादातर बात करते हैं क्लास 2, क्लास 5 वायर की, तो ये थोड़ा अगर आप शॉर्ट में बता सकें ये क्या होता है और ये क्लास 2 क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए? पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो क्लास 2 फ्लेक्सिबल वायर है वो भी टेक्निकल गलत प्रोडक्ट है। अच्छा। तो क्लास 5 तो उससे भी यानी अलग बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में खाली भारत, मॉरिशस और सेशल, क्योंकि वहाँ में सब लगभग इंडियन है कंसर्न, इसलिए वहाँ पे चलता है। बाकी पूरी दुनिया में क्योंकि कहीं भी ये वायर नहीं है। जो 7 स्टैंड वायर होता है, जो ब्रिटिश स्टैंड होता है, वो एक्चुअली सही वायर है। क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन कोई भी वायर यूज़ करने के लिए उसको दोनों वायर से छीलना होता है। तो और 80% लोग तो दांत से छीलते हैं, अभी भी अपने देश में चलता रहे। तो जो वायर आप जब छीलते हैं तो क्लास 5 कंडक्टर का वायर और पतला होता है और स्ट्रेंथ ज़्यादा होते हैं। तो जब मैं वायर छीलता हूँ ये बाजू से, तो कुछ तार के टुकड़े उसमें से निकल जाते हैं, कुछ तार के टुकड़े यहाँ बाजू से निकल जाते हैं, दोनों सेम कभी नहीं होते। तो क्या होता है कि आप 1.5 ग्राम वायर खरीदते हो
1.5 स्क्रम का पैसा देते हो, और जब वो यूज़ करने जाते हो तो 1 स्क्रम हो जाता है। इसलिए वो क्लास 5 कंडक्टर क्लास 2 से भी हानिकारक है। और आइडियली तो जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर है वो होना चाहिए, लेकिन उसको शायद समय लगेगा, लेकिन क्लास 5 तो वाकई में बहुत गलत है। The population growth in India is reciprocating the load bearings of electrical webs and bundles in residents' houses. It has become tough for homeowners to select the right wire out of the various available options and ensure the long life of electrical installations. However, most electrical contractors and technicians have been ignoring the fundamentals, leaving homeowners with high risks and potential threats hidden behind their house walls. A homeowner, first of all, they need to understand the sincerity and challenge of wire. It's a general tendency of anyone. They look and focus on what is looking outside. So what is going inside is not there. Though our country has grown at a particular level, but then electrical products is a big challenge. Whether it's a rural area, whether it's a tier 2 city, even in the city itself. The house is an asset. House is a home. They need to care. And because this wire is a big challenge in India, of course our standards are low, looking to a global standard, and the inferior material, spurious material is also available in the market. And never try to squeeze electrician or electrical contractor. Rather than squeezing, ask them with the perfect material, use the perfect material and pay more, because the changing of wire is going to be a big challenge, because it's going behind the wall. And anything you use in a home, everything is electrical or electronic. But you choose the best TV, best fridge, best oven, best mobile. But if the product which is giving the current, if it is not that good, it's going to be a challenge. So there are a lot of new things are available, the best products are available in the market. And in total, as a whole, the cost difference is almost negligible. The two factors, wire insulation and proper size, play a pivotal role in safeguarding the utmost lifeline of the house. The practice of undersized wire selling and the unregulated cable market is high in India, with most of them being unfriendly to the ecosystem and dangerous for the victim in case of an electrical fire. Generally, they use the size of wire on today's requirement. But we all know that when we make house today, and especially look into last 10 years or 15 years, how many gadgets have come in the home. Previously, when 30 years or 40 years before in one house, it used to be one light, one fan, and one light in bathroom, one exhaust fan, one light for geyser, that's all. Today now each room you have a TV. You may not have today, but tomorrow you will have. Then you need a mobile charger. If in a room husband, wife, two people, minimum 2 mobile. Nowadays people keep 2 mobiles, so 2 into 2, 4 mobile. So you need in future what is the requirement, because you cannot change wire every now and then. So then you need to be a good size of wire, good insulation of the wire. As I told you, see, still in India we feel that FR-less wire is the most safest, but I would like to tell you that FR-less wire is nowhere in the world. Only India, which we call as Jugadu, is there. Why the flexible wire is there in India? Because in India originally the house wire was reserved for small scale industries. So one corporate came, he started making flexible wire. That's why in India house wire is in picking up 90 meter. Last 45 years to still the retail in wire is 90 meter. There is no logic. Either it used to be 100 yard, 100 meter. But it was face saving, or to have a, means nobody can understand this is house wire. So this came in 90 meter. So it's a technically wrong product. Sir, can you please elaborate on the selling of undersized wire and its potential risk into the market? See, undersized wire is there in market, but it's very less. But more than wire, the cable is the biggest challenge. See, wire only undersized I found especially in Bombay and SRA buildings, because a lot of SRA fires are there. I came to know that people are using in spite of 1.5 square mm, even 0.8 square mm, 0.7 square mm.
And more than that, now many this ECAM, Electrical Contractor Association, met me in Maharashtra, that in PWD, they have not increased price for last 15 years. And still they are doing same job. So what they are doing, they are using non-standard, non-BIS wire. In spite of 1.5 scrum, they use 0.6 scrum and 0.7 scrum, which is not legally allowed. So this is a big challenge is there. But in cable, I can tell you that almost 70% cable in India sold by all the players is undersized. Very few companies are there which they are not compromising, but maximum. RR Kabel presents Short Circuit Se Suraksha, powered by News 18 Networks.